Yes, guys, very good evening to all. I'm audible. Good evening, sir. Yes, very good evening. Yes, guys, can you inform to others to join immediately so that we can start the session? Gitesh, Vishal, Harsh, Manoj, Harshkor, can you inform to others to join immediately? Okay, sir. Okay, let's start, guys. Yes, sir. Okay. So, guys, today we will start our Hibernate framework. Okay. So, have you completed your previous task, everyone? Yes, guys. So, my screen is visible. Yes, sir. Okay. So, first of all, I'm going to close all the files. Okay. And I'm going to start with Hibernate. Okay. So, guys, if you have done JDBC now, because what happened earlier, they were in companies, they were developing web application using JSP servlet integrating with the JDBC. In JDBC, it's very difficult to perform all the operation. We can do it, but it takes too much time to in development because in JDBC we need to remember each and every column name, table name. We need to write the query. Queries are very complex. Okay, but in industry they require to develop application in very fast. So a new concept comes into the picture, that is Hibernate framework. So Hibernate basically deals with your database. Okay, it deals with the database. So Hibernate is an object relational mapping solution for Java. We will save direct object
of a class in our database. But in JDBC, we were storing single column. For example, student roll number, student name, contact, email, address. Each and every column we need to map with our table. Okay, but here we don't bother about individual column name. No, we will directly save complete object of the class. And what is the benefit of Hibernate framework? We don't need to write any SQL query. We will write code in a Java. It is a duty of Hibernate framework to convert your Java code internally SQL query. Why? Because Hibernate deals with HQL. HQL stands for Hibernate Query Language. Is it clear? Yes, guys, tell me yes or no. Yeah, so remember one thing, Hibernate deals with is based on ORM, object relational mapping. Okay. Hibernate maps Java classes to database table. Okay. Hibernate maps to, yeah, we need to create classes and automatically it will map to database table. So Hibernate map Java classes to database table and from data and Java data type to SQL data type. See, you are writing Java data type, but automatically it will map to SQL data type. Okay. And you are writing 100% code in Java. You are not writing code in SQL, but it is a duty of a Hibernate to convert your Java code to SQL. Is it clear? Tell me yes or no. So in other words, you can say Hibernate sits between your Java program and RDBMS. Okay. Hibernate sits between traditional Java object and database server to handle all the work in pending those objects based on appropriate OR mechanism and pattern. Fine. Tell me yes or no. So see this architecture. This is your application. This is your database. Okay. We need to store persistent object, means we need to store our object in database. We need to retrieve our object from database. How it is possible? With the help of Hibernate. In this, we will contain Hibernate configuration file and mapping file. But nowadays, we are not using mapping file because nowadays we are using annotation. Okay. Is it clear? Earlier, they were using mapping file. Mapping file basically we need to write in XML file, but nowadays no one is using mapping file. Nowadays everyone dealing with the annotation. Okay. So the above diagram shows that Hibernate is using database and configuration data and provide a persistent service. Guys, when you implement the concept of Hibernate, there will be one configuration file. Okay. That is the very important configuration file, because when you run your project, first of all, compiler read which file? Configuration file. And configuration file we write in XML. In configuration file, we write each and everything. For example, our database name, our username, our password name, our driver name of our database. Okay. Database also, dialect also, SQL queries also, number of things we need to write in a database. In Hibernate, you should familiar this persistent API like session factory. You should know session factory belongs to your database. You need to create object of session. What is session? We will discuss. You need to create object of transaction also. Okay, transaction factory also. So each and everything will be clear one by one. In the beginning, for you, each and every term is new. But when we do practically one time, then concept will be clear to you. Your base will be clear because same step you need to implement again and again. Okay. This is the architecture of Hibernate. First of all, I told you now, in Hibernate, you need to create which file? Configuration file. Which file, guys?
So in configuration file, basically, if you have object of configuration file, then you can create a object of a session factory. If you have object of session factory, then using open session, how you create object of session factory? Using build session factory method. Build session factory method is coming from this configuration object. And session factory you can create using build session factory. Session you can create using open session. If you have a object of session, see guys, what you can do. You can create transaction object. You can perform any transaction like save operation, update operation, delete operation. You can perform any query also. You can perform any criteria also. Is it clear? Tell me yes or no. So I'm trying to explain each and every API which we will use, okay? Okay. So this is Hibernate architecture. This is application, see session factory, session, transaction, JTA, JDBC, JNDI, okay? Fine. Is it clear, guys? Just wait a minute, okay? Yes, guys, is it clear? I'm audible, guys? Yeah, yes, sir. So whenever you are implementing Hibernate, this term you should know. Session factory, session, transaction, okay? Because this term we need to use it. So you know, this is the previous version when we were using Hibernate, we were using XML, sorry, mapping file, but nowadays we are not using mapping file. So leave it. This is Pojo file. Okay. Pojo stand for plain old Java object. Okay. Pojo stand for plain old Java object. Mapping file we are not using. Okay. Nowadays we will implement the with annotation only, which makes your concept very easy. Yeah. Now, very important thing, configuration. I told you, na, configuration is very important. Yes, guys. So configuration is a class. Okay. Remember one thing. Configuration is a class which is present in which package, guys? org.hibernate.cfg package. So it activate Hibernate framework. It read both configuration file and mapping file. How to create object of configuration. See, this is class simply like we create object of any class. Simply we are creating it. CFG is the object of configuration. And remember one thing. When you create object of configuration, then you will call it's a static method. Which method? Configure. Okay. This is the very important method. When you call this method, it read your entire configuration file. ये सारी की सारी आपकी configuration file को read करेगा. Is it clear? सबसे पहले जब भी आप Hibernate कर रहे हो, you are implementing the concept of Hibernate and you are calling configure method. It check your entire configuration file. Okay? तो अगर तो कोई एरर होगा यहाँ से ही पता लग जाएगा. सेकंड स्टेप से आगे करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आगे कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये सेकंड स्टेप से ही पहले चेक करो कि आपका कोड सही चल रहा है या नहीं. क्योंकि जैसे ही आप लिखोगे cfg.configure,
it will read your complete configuration file. अगर उसमें कोई एरर होगा तो ये बता देगा, अगर नहीं होगा तो आप आगे कोड लिख सकते हो. फाइन फाइन गाइस. So what we need to do further, it check whether configuration file is syntactically correct or not. If the configuration file is valid, suppose there is no error. Okay, suppose there is no error. Suppose configuration file is not valid. Okay, not valid, then it will throw an exception. If it is valid, then it create a metadata in memory and return the metadata to object to represent the configuration file. Fine guys. So this is the structure of your configuration file. See, we need to create one XML file. This is the DDD. How to add it? We will perform each and every step one by one. Okay, don't get confused. So in configuration file, we will take one tag Hibernate configuration. In Hibernate configuration tag, we will take one session factory. Session factory basically for one database. If you want to connect with more than one database, then you need to create one more session factory. This is the beauty of Hibernate. You can perform connectivity with more than one session factory also, more than one database also. Okay, is it clear? And why we are using Hibernate? Guys, tell me. Suppose you have an application, web app 1. Okay, it is implementing with the suppose servlet JSP plus a JDBC. Okay, using MySQL. Is it clear, guys? Tell me. So what happened after month? There is a new requirement. Now you need to do connectivity with the different database. Okay, suppose there is a requirement or new project, some whatever you can assume. Okay, whatever you can assume. Suppose now you need to do connectivity with the Oracle. Okay, and guys, so what we need to do? The syntax of MySQL is different. Okay, syntax of MySQL queries are different from Oracle. जब आप अपनी एप्लीकेशन चेंज करोगे डेटाबेस, Oracle की क्यूरीज का सिंटैक्स डिफरेंट होगा ना, जो कि MySQL का यहाँ लिखा हुआ है. Yes guys. Guys, everyone, are you there or no? No one is responding. Only Yes, sir. responding. So after 6 months or 1 year, suppose you want to change the database. Okay. So here syntax is different and here syntax is different. So you need to do number of changes. Can you imagine? There are number of web pages, there are number of files, number of operations you need to do. You need to change the syntax every time. It will take time now. Tell me yes or no. Yes, sir. But if you are connectivity with Hibernate, if you are doing connectivity with the Hibernate, suppose using MySQL database, and then
you don't need to do any change. This is your configuration file. You need to change only two things. First, this drivers 9, okay, this file or this dialect. You need to do only two changes. Or you can say this DTD you need to change. I no, this no need to change DTD. Only two changes. This file and this file. It will take how many time, guys? How much time? Tell me. 1 minute now. Because in Hibernate, we write code automatically. This Java code convert internally in SQL. It is a duty of Hibernate because you are writing code only in Java. Suppose later on you are doing connectivity in Oracle, then it is a duty of Hibernate to do convert your Java queries into Oracle. Okay. So now you understand what is the benefit of Hibernate. So here you are writing data in primitive data type. Primitive data type, for example, you have a one class student. In student, there are number of attributes: roll number, name, class, okay, email. So you need to remember data type of each and every column. You need to remember column name of each and every spelling, okay, each and everything, index also. But in Hibernate, what you need to do? You don't remember anything. You need to store only object of student class. That's it. You need to save complete object. You don't bother about its column name, roll number, name, class, email. You will directly save complete object, which save your too much time. Okay. So any doubt till now? Because before proceeding further, I'm explaining each and every important concept to you why we are using Hibernate if you compare with JDBC. Okay. So Gitish, tell me what is the difference, what is the benefit of Hibernate, what do you observe till now? Hmm. 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 Okay, so guys, is it clear? So this is the syntax of configuration file. How to create this configuration file we will also learn. Okay. So we need to create object of session factory also. I told you session factory um, belongs to your database. See which tag I'm using here, session factory now. Yes, guys. One session factory belongs to your database. So session factory is the interface which is present in org.hibernate package. Okay. Which is present in a org.hibernate package and it is used to create session objects. It is immutable. Okay, you can't change it and it is thread safe in nature. तो एक build session factory होता है जिसकी हेल्प से आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो. सपोज CFG आपका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है. इसके पास एक मेथड होता है build session factory. कैसे आप इसका मेथड का यूज करोगे, then you can create object of session factory. Guys, is it clear?
So session factory object is used by all the thread of an application. It is thread safe object. One session factory object is created per database. मैंने आपको बताया था ना, अगर एक से ज्यादा डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो एक से ज्यादा सेशन फैक्ट्री आपको डिफाइन करने पड़ेंगी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में. ओके. So multiple session factory object are created when connecting to multiple databases. The session factory can also provide caching of persistent object. Okay. अब इसको यूज कैसे करना है गाइस? ये देखिए, सबसे पहले आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने. जैसे कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट बना तो वहां से सेशन फैक्ट्री बनेगा. कैसे बनेगा? इस लाइन को देखो. कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट यूजिंग बिल्ट सेशन फैक्ट्री एंड यहां से आपको फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल गया. जैसे ही फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा वहां से आप अपना सेशन क्रिएट कर सकते हो. सेशन. अब सेशन कैसे बनेगा? ये देखिए, ये फैक्ट्री क्या है? आपका ऑब्जेक्ट था ना गाइस, सेशन फैक्ट्री का. यस गाइस, ये ऑब्जेक्ट आपको एक और मेथड प्रोवाइड करेगा, दैट इज ओपन सेशन. टेल मी, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे गाइस? टेल मी. यस. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. तो आप एक चीज नोट करो कि कॉन्फ़िगरेशन आया तो सेशन फैक्ट्री बना, सेशन फैक्ट्री बना तो सेशन बना. ठीक है. सेशन के बाद आप ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो. ट्रांजैक्शन. गाइस, आपने कभी नोट किया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो एक ओटीपी आता है, राइट? अगर तो आप ओटीपी एंटर कर देते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, नहीं तो अनसक्सेसफुल हो जाती है, राइट? तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो तो आपको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? ट्रांजैक्शन का. ट्रांजैक्शन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन मेथड से आप ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने डाटा सेव करना है, आप चाहते हैं कि आपका डाटा परमानेंट बेसिस पर स्टोर हो जाए तो आपको कमिट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा गाइस? कमिट. ओके. वहां पर आप टाइमर सेट कर सकते हो. वो एक सर्वलेट में एक फीचर होता है टाइम आउट. ओके. जब आपने सर्वलेट किया था ना, सर्वलेट, तो उसमें ना एक फीचर होता है टाइम आउट के. ऑटोमेटिकली जैसे आप मान लो किसी बैंकिंग वेबसाइट में आपने लॉगिन किया तो आपने नोटिस किया होगा ना कि ऑटोमेटिकली वो साइन आउट हो जाता है. ठीक है. तो उस चीज को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई प्रोजेक्ट है. ठीक है. इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या कोई है आपके पास एक्सएमएल फाइल. यस. तो इसमें क्या होता है कि एक ना टैग होता है, सेशन टाइम आउट. आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सेशन. एक टाइम आउट का होता है, मतलब उसमें आप लिख दोगे कि कितने मिनट के लिए आपका सेशन एक्टिव रही. ओके. सेशन, जस्ट वेट. ओके, मैं आपको बता रहा हूँ. तो वैसे ही उसके लिए भी आप कर सकते हो. ओके, जस्ट वेट. सेशन कन्फिग कर है ये टैग. ओके.
So guys, my screen is visible. Tell me. तो जैसे ना एक टैग होता है, जैसे आप अपनी XML में लगा नॉट येट विजिबल। अब ठीक है सर। ओके, तो आपके पास एक टैग होता है, ये देखो सेशन कॉन्फ़िगर क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, सेशन टाइम आउट 5, कि अगर आपने लॉगिन किया और आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो वेबसाइट में, कुछ भी ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हो, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप लॉग आउट हो जाओगे। कितने टाइम के बाद? 5 मिनट के बाद। ओके, आपने नोटिस किया होगा ना, कोई बैंकिंग की वेबसाइट में आप लॉगिन करते हो नेट बैंकिंग के लिए या कोई, हाँ तो ये, हाँ तो ये सेशन टाइम आउट के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर ये टैग लगाया होता है कि जैसे ही कोई आपकी आप कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आइडल है राइट आपका सेशन, तो इतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इस टैग को भी आप नोट कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो जब आप सेशन ट्रैकिंग में कर रहे थे। आई फॉरगेट टू टेल यू। ओके, हम डिस्कस क्या कर रहे थे अभी? हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांजैक्शन के कमिट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये चीजें क्लियर हुई गाइस? टेल मी यस और नो। कुछ नॉलेज हुई आपको? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, क्या करेंगे गाइस? वी विल डिस्कस द थिंग्स प्रैक्टिकली। So I'm going to create new project. Okay, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है? मेवन प्रोजेक्ट। ओके गाइस, विच प्रोजेक्ट यू नीड टू सिलेक्ट? मेवन। तो आपने नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे ना कैटलॉग है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। यू नीड टू सिलेक्ट विच वन? इंटरनल। ओके, इंटरनल। और यहाँ पर आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट 1.1। फाइन, मेवन archetype quick start 1.1, then I will click on next। अब यहाँ पर ग्रुप आईडी है ना, ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने क्या लिया, हाइबरनेट बैच। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी क्या दे सकते हो? मान लो मैंने डेमो दे दी, ठीक है। आर्टिफैक्ट आईडी आप हाइबरनेट ट्रेनिंग दे दी है। ओके, अब जो आपका पैकेज बनेगा, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। देखो पहले क्या आ रही है आपकी? ग्रुप आईडी आ रही है और बाद में डॉट लगा कर क्या आ रहा है? आर्टिफैक्ट आईडी आ रहा है। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। ओके, देन आपने क्या करना है? फिनिश पे क्लिक किया। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। देखो हाइबरनेट ट्रेनिंग नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया आपका। अब हमने बनाया है मेवन प्रोजेक्ट। ओके, तो मेवन में सबसे पहले आपने किस फाइल को ओपन करना है? pom.xml। अब पॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? एनीवन नो? पॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होती है गाइस? क्या? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जो आपकी पॉम फाइल होती है वो किस लैंग्वेज में लिखी होती है? एक्सएमएल फाइल। ओके, किस लैंग्वेज में लिखी होती है गाइस?
ये सारी एक्सएमएल है। देखिए यहाँ पर आपकी ग्रुप आईडी है, ये आर्टिफैक्ट आईडी नेम है, वर्जन लिखा हुआ है, पैकेजिंग आपकी जार है, नेम आपका हाइबरनेट ट्रेनिंग है, यूआरएल आपका मेवन अपाचे .org से सब कुछ डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि ये मेवन है ना, मेवन का मतलब क्या होता है कि जो प्लगइन्स होंगी, जो जार फाइल होंगी, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी वेबसाइट से, और वो आपके इस जो मेवन डिपेंडेंसी वाला ये फोल्डर है यहाँ पर ऐड होती जाएगी जैसे जैसे आपने यूज करते जाओगे। ओके, इज इट क्लियर? तो हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी एक डिपेंडेंसी वाला टैग है। देखो यहाँ पर जो जो हमें फंक्शनैलिटी चाहिए उसकी डिपेंडेंसी हम ऐड करते जाएंगे, और उसके जो रेलिवेंट जार फाइल है ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके आपकी इस मेवन डिपेंडेंसी फोल्डर में ऐड होती जाएंगी। ये कहाँ से मतलब डाउनलोड होती है? maven.apache.org ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा। इसलिए मेवन प्रोजेक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। जैसे मान लो आपने जेडीबीसी करना है, आपको जेडीबीसी के लिए एक ड्राइवर फाइल डाउनलोड करके प्लगइन करनी पड़ती थी ना, यस और नो? तो यहाँ पर तो हमें बहुत चीजें यूज करनी होती हैं, हर बारी हम डाउनलोड करके ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है मेवन का, हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डाउनलोड अपने आप तो होगा नहीं, आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होंगी और आपकी मेवन डिपेंडेंसी के फोल्डर में वो ऐड हो जाएंगी। राइट? यस गाइस। तो अगर आपने हाइबरनेट करना है तो सबसे पहले आपको दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, एक हाइबरनेट कोर और एक माई सिक्वल कनेक्टर, क्योंकि हम जो कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस के साथ वो माई सिक्वल है, और हाइबरनेट की एपीआई यूज करनी है तो हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी चाहिए। ओके, तो इसको यूज कैसे करना है हमने, हम ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी। ओके, हाइबरनेट कोर मेवन डिपेंडेंसी, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो क्या होगा गाइस, एक लिंक ओपन हो। ओके, ये देखिए, अब यहाँ से ना आपने किसी फाइनल वर्जन को डाउनलोड करना है। ये देखो, ये क्या है, सेंट्रल बीटा 2, इसको नहीं करना, अल्फा को भी नहीं करना, हम किसी भी फाइनल वर्जन को उठा लेंगे। ये देखो, ये फाइनल वर्जन है, तो मैंने 5.6.2 को उठा लिया सब फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर जैसे मैंने ओपन किया तो ये डिपेंडेंसी आ गई, लिखी हुई है ना गाइस डिपेंडेंसी। तो आपने इस डिपेंडेंसी को क्या करना है, कॉपी करना है। ओके, और ये देखो, ये फर्स्ट डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया। ओके, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखना, जैसे ही अब मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट है मेरा लैपटॉप, तो जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली कुछ जार फाइल्स डाउनलोड होंगी, और वो किस में ऐड हो जाएंगी, आपकी मेवन डिपेंडेंसी फोल्डर में। फाइन, कहां पर ऐड हो जाएंगी? सेव कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को, अब ध्यान से देखना, मैंने जैसे सेव किया ये डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो 30%, 33%, ऑटोमेटिकली जार फाइल आ गई ना गाइस। तो इतनी जार फाइल क्या आप डाउनलोड कर सकते थे, यहाँ पर ऐड करते, कोई स्किप हो जाती? टेल मी यस और नो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ मेवन प्रोजेक्ट। ओके, अब हमने एक डिपेंडेंसी तो ऐड कर दी हाइबरनेट कोर की, लेकिन मुझे कनेक्टिविटी करनी है माई सिक्वल के साथ, मुझे एक और चाहिए डिपेंडेंसी। तो मैं इस वेबसाइट को बैक करूंगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर। ओके,
जैसे मैंने एंटर किया माई सिक्वल कनेक्टर, तो क्या होगा, ये लिंक आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए। तो अब हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं माई सिक्वल का, 8 कर रहे हैं ना गाइस, टेल मी। आपके सिस्टम में माई सिक्वल 8 वर्जन स्टोर है ना? Okay guys, as your wish, if you are not responding. यस सर। तो गाइस आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? इफ आई एम आस्किंग टू यू, टेल मी। हाँ जी बताइए। आर यू इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू और नॉट? यस सर। तो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो माई सिक्वल का, बताइए।